आने के बाद जज शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का क्या रवैया था? इमरान साहब ने कहका मारा जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 साल सजा होगी अबानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को क्या कहेंगी? इंशाल्लाह ये ओवरटर्न हो जाएगी। अगर हाई कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे? 10 बिल्कुल साल बिल्कुल हर बिल्कुल दरवाजा जा रहे हैं, हम खटखटाएंगे। इंसाफ का हर दरवाजा खटखटाएंगे और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। पहले हम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में अपने वोटर्स के दरवाजे खटखटाएंगे जो कि हमें कामयाब इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट भी जाएंगे और सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा और अल्लाह की अदालत से भी इंशाल्लाह मिलेगा। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। फैसला सुनाने के बाद जज शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का क्या रवैया था? इमरान साहब ने कहका मारा जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब ने भी कहका मारा, शायद एक आध आंसू किसी बहन ने गिराया, किसी ने नहीं, लेकिन हम लोग बहुत बहादुर हैं। अजीब माहौल हमारे था। जो अज़म है, हमारी जो वो है, कोई नहीं तोड़ सकता। ये समझते हैं कि हम कमजोर औरतें हैं, हम नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। अल्लाह ने हमें बहुत मजबूत बनाया। बल्कि शोर मचा कोर्ट में कि जज साहब आप जा कहाँ रहे हैं? अभी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है शाह साहब की। आप किस तरह ये नाइंसाफी कैसे कर रहे हैं? कोर्ट में फर्क लोगों की आवाजें आ रही थी, पता नहीं कौन क्या कह रहा था, बट बात तो यही हो रही थी कि जज साहब आप कैसे जा रहे हैं? आपने अपना काम ही नहीं पूरा किया, कार्रवाई पूरी हुई नहीं, आप कैसे चले गए? कौन सी ट्रेन पकड़नी थी? अब सबसे अहम होगा जो थरपार के जहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या अब सजा के बाद अब नहीं लड़ पाएंगे? नहीं जी, कैसे लड़ेंगे? और शायद यही एम था, इसीलिए तो किया है इतनी जल्दी में कि डिस्क्वालीफाई करें ताकि ये असेंबली में ना पहुंच सके। लेकिन आपके कैमरे के जरिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा भाई वहाँ से कवरिंग कैंडिडेट है मेरे वालिद का। प्लीज आप लोग ये ना समझिए कि हम हार गए हैं। आप जाइए, निकलिए, जैन कुरैशी को वोट दीजिए थरपाकर में के लोग, और उसकी जीत को यकीनी बनाएं, क्योंकि उसकी जीत पीटीआई की जीत ही पाकिस्तान की जीत है। शुक्रिया। मन रहिए, आपने कोई कानून हाथ में नहीं लेना, आपने एहतजाज भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। आपका एहतजाज वोट डालना है, आपका पीटीआई के लिए, आपका एहतजाज आपका जवाब होगा 8 को वोट के जरिए। तो वोट के बदले ही हम लेंगे। और जाते जाते आपको कहूँ, जुल्म और ना इंसाफी का बदला वोट से। यही जमहूरी तरीका है और इन्हीं जमहूरी तकाजों को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बाकी अल्लाह के हाथ में है, ईमान है दिल में, दिल साफ है, नीयतें साफ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह जो है हमें इसका सिला देगा। आमीन। बहुत शुक्रिया। Farcical, a complete mockery of the law. We were present in the court. My father, Imran Khan, managed to record his statement, which was also hurried by the judge. He left and then came back, perhaps was taking direction from somewhere. My father was right after him supposed to record his statement. He was not given that right. This right given to him by the criminal code, section 342 CRPC, gives him the right to record his statement. However, that right was taken away from him because the judge ran away. He ran away like he had a train to catch. And soon after, his staff ran away too. So right now, for the past, it is now 2:30. Since 12:30, we have been waiting for the copy of the order, so that we can then do whatever we need to do legally. Without that, we have very little to do. So we are waiting and we are hoping that between the High Court and the Supreme Court, we are given justice. What next steps do you think that... We have already taken the matter to the High Court. In fact, all of this was happening simultaneously. And perhaps there is some fear of the two gentlemen inside, even though they are in solitary confinement, but the fear is very real. And all I want to say on behalf of the captain and the vice captain is, do nothing except come out on the 8th of February and vote for PTI. Make sure that the PTI is sitting in government so that the PTI can start making changes and making this country a better place to live, so that our people stop leaving, so that the brain drain stops, so that our people can come back
and live in this country with peace, happiness, and have their rights intact. It is most important. Thank you. Thank you. Thank you. He gave his verdict without listening to Shah Mahmood Qureshi. He had to give this statement in his defense. Nobody heard him, but he was sentenced to 10 years in prison. Is this fair? Shouldn't the world be talking about this? What's happening in Pakistan? The murder of justice? It was almost the murder of horrible. democracy, the murder of justice, that is happening in Pakistan. The whole world should be concerned about this. The world to be concerned about this. Because, look, this is not about two men only. This is not about one party. This is about 250 million Pakistanis. You cannot take their rights away. And we will not allow you to take their rights away. I'm just an average citizen, just like all of you. But I will fight for my right. And I hope that you will too. And on the 8th of February, you must come out and fight for this right. You must go out and vote. I hope you vote for the PTI, and I hope you help the PTI succeed so we can actually start making changes in this country, so things can actually start working in this country. Because we are desperate right now. Our economy is suffering. Our politics is suffering. We कहते हैं, our international relations are suffering. You know what's suffering? 250 million people are suffering, and that is what counts. Are you going to challenge in court? We have already gone to the High Court. In fact, both things are happening simultaneously. And if required, we will also go to the Supreme Court. I'm not sure if you were inside, but there are certain colleagues of yours inside. And my father said to them, he said, I still have certain secrets that I am keeping very close to my chest. But when the High Court and Supreme Court call me, I will give my statement. And it will be a lot bigger than yesterday's statement about General Saab. So and I, standing right next to me, and what we witnessed today was a complete mockery of the law. From the get-go. First of all, when we arrived here, we saw police in riot gear. Obviously, that was very alarming and very concerning, but we don't scare easily, alhamdulillah. Then, my father was not given his right of recording his statement, which by the Constitution is given to him under Section 342 of the CRPC of the Criminal Code. He was not given that right. It was taken away from him. It's a very basic right. The judge left before my father could record his statement. Yet, he convicted him for 10 years. So my question is, where is justice? And when will justice truly be served in this country, if at all? Thank you so much. 10 साल सजा हो गई बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को, क्या कहेंगी? इंशाल्लाह ये ओवरटर्न हो जाएगी. अगर हाई कोर्ट में जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगी? 10 साल बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल दरवाजा जा रहे हैं. खटखटाएंगे. हम इंसाफ का हर दरवाजा खटखटाएंगे और हम इंसाफ लेकर रहेंगे.